This experiment or whatever we call it, जिसको हम स्कूल कहते हैं, this campaign or whatever, जिसमें हम कोशिश करते हैं to induce, imbibe, enable our students to effectively master their subjects of curriculum. Obviously, they are not yielding any striking victories. इतना क्लियर है. अब हम थोड़ा सा अपना मेयार कम कर लेते हैं कि लेट्स टेक वो वाला साइड ना कि भाई इतना भी बुरा हाल नहीं है. कम से कम थोड़ा सा जनरल नॉलेज तो बच्चों के दिमाग में आता ही है. एटलीस्ट सम स्टॉक ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन मस्ट बी एंटरिंग आवर स्टूडेंट्स माइंड्स. ये वाला टॉपिक है of students simply knowing at least a few things, even if they don't understand it, but simply knowing a few things. This is a very tempting question because it's very easy to construct a general knowledge test. You can simply ask a few questions. What's the capital of India? How many states are there in India? ये simple questions है. कार्नेजी फाउंडेशन की हमने स्टडीज इससे पहले भी कोट की. They have dealt with this question, and we can take their results to be the representative of all the studies. ये study क्या दिखाती है? It showed that this gain in general information between first year students and final year students in college, and also between like last year of your school and first few years of your college, कोई बड़ा difference नहीं है. अब इसको आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें. जनरल इंफॉर्मेशन में आपके फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. यू वुड से कि जितनी पढ़ाई की थी उतनी ज़्यादा डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है. वैसे ही फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज एंड द लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल, उसमें कितना डिफरेंस है. नॉट मच, यू वुड से टू योरसेल्फ. बहुत सारे कॉलेज सीनियर्स you would know they don't have much wider general knowledge than the first year students, and sometimes the first year students, they just beat them up, and some of them are not even better informed than the high school students. 12वीं का बच्चा, 11वीं का बच्चा. ये जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी ये स्टडी, काफ़ी सारे लोगों ने इसको एनालाइज करने की कोशिश की. Yet lot of people commented on it, they were critical of it as well. But to anyone familiar with the literature of educational research, it was no surprise. And for us as well, it is no surprise. Any one of us who is in the field, we know कि यही है हाल. अभी कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही है कि we would be surprised and shocked. ये अपने दौर में लिख रहे हैं in this day of encyclopedias, world almanacs, public libraries. हम हमारे ज़माने में कह सकते हैं इंटरनेट, गूगल, social media, Wikipedia. In this day of social media, Wikipedia, you can like Google anything, and YouTube and etc. So there's a large stock of information which is there for you, ready references. And इस वजह से to carry all this baggage inside your mind, it seems कि इसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं है अब. Why should I remember all this? I can simply Google it at any time. In fact, many people don't even purchase books anymore. They keep their soft copies in their libraries. In fact, I have a library of soft copies, PDFs. मैं हार्ड कॉपीज़ की भी लाइब्रेरी रखा हूँ, लेकिन मैंने एक सॉफ्ट कॉपी की भी रखी है. देयर आर सर्टन बुक्स जो मैंने खरीदी नहीं है इन प्रिंट.
तो बहुत सारे लोग ये करते भी नहीं है. I have seen people who have this Amazon का Kindle or whatever that is, और वो उसी पे अच्छे से मेंटेन करते हैं अपनी लाइब्रेरी, प्रॉपर लाइब्रेरी की तरह. You just enter the room and there's a particular kind of book there. In fact, nowadays even professional scholars, they also do it like this. Or they Google, they know there are these databases of research papers. There are online libraries जिसपे वो membership लेते हैं, and universities, they take membership in certain research papers के journals etc. And you must be knowing all that. आजकल के ज़माने में it is far more important to know where to look for facts and what to do when you find them. आज you don't need to like present data from a moment's notice. Like I remember I was watching a video. There's this scholar. He is doing a series. There are 3 lectures in that series on Islam. It's somewhere in the West, and he was talking about Islam, and then so last में question and answers थे तो एक student. It's a lecture. यूनिवर्सिटी या कॉलेज का होगा किसी का वो. तो एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा कि जो ये क्यूब यू टॉक्ड अबाउट विच मुस्लिम्स प्रे टुवर्ड्स in the direction of which they pray, Kaaba they were talking about. So asked what are its dimensions. So he responded ki it's not a very big thing, it's a small thing, and but I don't know the exact dimensions. Could be like 7 feet by 7 feet and 20 feet high. So no, don't expect him to know it. He is a Christian teaching it, and Muslims have a very different attachment. We would know all these nitty-gritties. He could not. He knew it enough for that. It's a wonderful series. So in like 10 minutes, another student corrected कि it is 40 by something. So that's possible today. It wasn't possible before. So it seems unnecessary to remember everything. So the very strong and consistent evidence कि हमारे 12वीं के बच्चे जो हैं 16 साल पढ़ के जो निकलते हैं कॉलेज और स्कूल से, उनके पास ज़्यादा मेमोरी, रेडी टू यूज़ मेमोरी नॉलेज नहीं है. इट ऑल ऑफ अ सडन मेक्स ये डेटा किसी काम का नहीं है. दो इट सजेस्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, येट इट नाउ हैज़ बिकम ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंस कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है. सो इफ़ यू आस्क ए स्टूडेंट you don't know the capital of India, he would be like, oh, I do not need to know, I'll Google it and find it for you. All I need to know is how to use Google, which makes sense. It makes a lot of sense to talk about like this or think about like this. But then, even if that is granted, yet आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इतना तो सुना ही होगा या आपसे कहा ही गया होगा that सब्जेक्ट्स का एक वर्थ जो आप पढ़ते हैं उनका एक वर्थ तो ये है ही कि वो किसी और सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करते हैं. सो यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ से फॉर एग्जांपल ग्रामर सो दैट यू कैन डू इंग्लिश बेटर. आप इंग्लिश में राइटिंग और रीडिंग अच्छी कर पाएंगे, इसलिए ग्रामर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. यू शुड नो से फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी अच्छे से सो दैट यू कैन डू लॉजिक के क्वेश्चंस अच्छे से. तो और ये अगर आप गूगल करते फिरेंगे मतलब हर 2 मिनट बाद, सो यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. और ये हमने सुना ही होता. आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन. हमारे इंजीनियरिंग में व्हेन वी एंटर द इंजीनियरिंग कॉलेज, व्हेन वी टेक अप सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक व्हाटएवर, इन द फर्स्ट ईयर यू आर टॉट द जनरल थिंग्स जो सब सेम ही पढ़ते हैं. अब इस सब में फॉर एग्जांपल वी वर टॉट इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, वी वर टॉट C language, C++ language, and a lot of students were creating hue and cry that why do we need to study it. और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स we were taught say managerial economics, we were taught organizational behavior, we were taught even a subject on psychology. Now many civil engineering students are like why do we need to study all this, and rightly so. Apparently there is no need, and then the explanation that is given is it will help you in so and so subject, it will help you in so and so subject, you have to do CAD. If you don't understand how CAD works, you would not be able to make full use of it. That's why you study C++. That's a bad explanation, but okay, fine, got it. There are better explanations why you study these
subjects from other streams. ऐसे ही जैसे for example, Latin is said to help. If you study this language, you would develop hold on English or other languages which depend on it. ग्रामर कहते हैं कि अगर आप ग्रामर सीखोगे, मैं भी आपसे ये कहता रहता हूँ बार बार, इफ़ यू हैव गुड होल्ड ऑन ग्रामर यू वुड हैव गुड होल्ड ओवर रीडिंग, राइटिंग, लॉजिक. एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहा जाता है कि देखो बेटा, आपको फिजिक्स आगे लेनी है, अगर मैथ्स अच्छी होगी तो फिजिक्स अच्छी कर पाओगे. ज्योमेट्री के बारे में कहा जाता है कि इफ़ यू डू ज्योमेट्री वेल यू कैन रीजन वेल. ये सारी चीज़ें इधर फैमिलियर, आप लोगों ने भी इसको बहुत बारी सुना होगा. So what one learns in one subject, it transfers to others and it helps you master them. So this is what is said. ये जो hypothesis है of transfer, this has been one of the chief topics of educational and psychological research. ये क्या ये होता है? अगर हमारा ग्रामर अच्छा हो तो हमारी लैंग्वेज बेहतर होती है. क्या ये एक्चुअली ऐसा होता है? जनरल एंड एक्सेप्टेड जो है ना, द एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. तो जनरल एंड एक्सेप्टेड टेस्टिमनी इतने रिसर्च की पता है क्या है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. लिमिटेड, वेरी लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस. सो इफ यू आर गुड एट ग्रामर, इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि इट वुड हैव अ डायरेक्ट लिंक कि आप अब इंग्लिश में भी अच्छे होंगे. मैथ्स आपका बहुत अच्छा था तो फिजिक्स आपकी 11वीं में अच्छी होगी. रिसर्च इज ऑलमोस्ट डन ऑन इट कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स हु टेक से फॉर एग्जांपल लैटिन, दे शो नो बेटर इन अदर फॉरेन लैंग्वेजेस देन दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट. They cannot read it better, they cannot write better, they cannot spell better, they cannot use larger vocabulary, nothing. And again research has shown कि English grammar, अगर आप grammar सीखेंगे, it has no value कि वो आपको एक competent user English language का बनाएगा. और आपके सामने ऐसे बहुत examples होंगे students who are very good at grammar but they're bad at language. They cannot even speak it. And research is like almost done on it that persons who have spent a great deal of time studying grammar, they do know better either in composition or in reading or in any other thing as compared to those who did not have grammatical training. हम आपके सामने खुद ही मिसालें हैं. हम में से कुछ होंगे जिनने ग्रामर अच्छे से पढ़ा होगा, हम में से कुछ होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा. एंड वी आर ऑलमोस्ट लाइक सेम. सभी लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी देख लें, you would also be like, get it, ऐसा ही है. Similarly, फिजिक्स के टीचर से अगर आप बात करेंगे, they will tell you कि ऐसा लगता है कि स्कूल से निकलने के बाद ये मैथ्स ही भूल जाते हैं. No transfer of training takes place from maths to physics, for example. हमारे केमिस्ट्री के बच्चे या फिजिक्स के बच्चे, they once again start learning, say for example, differential equations. वो फिर से उनको पढ़ना पड़ता है. And all of research backs up this, whatever we have been saying. In fact, geometry के बारे में that it helps people reason better, this is preposterous. There is no evidence whatsoever. बाकी में तो किसी केस में थोड़ा कुछ मिल जाता है, इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता, nothing. तो ये जो हमने इतनी सारी बात की, what is the result of this discussion? The result is that everyone agrees on what I told you. Every elementary textbook on educational psychology agrees on it. Commonplace teachers की gatherings जहाँ पे वो discuss करते हैं future policies of education, they agree on it. Practically every professionally trained teacher in America, they have known it कि transfer of training does not take place. Yet, it seems that they are reaching to this conclusion without being critical, without taking adequate insight into the evidence. देखिए, when one studies a subject, जितने भी benefits होंगे उसको, they might be within the subject. ये हमारी अभी जो studies है यही कह रही है कि अपने subject में फ़ायदा देते हैं, आगे कोई फ़ायदा नहीं देते. लेकिन इस study से बेहतर इन्फ्रेंस ये निकलती है, मॉरल ऑफ द टेल जो है वो ये स्टडीज खुद से नहीं बताती, वो ये टीचर्स खुद से नहीं बताते.
वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग शुड टेक प्लेस. If you are good at maths, you must be good at physics. This is done. If you learned Latin, you should have understood English. If you learned grammar, you should have been good at that language. उसको चैलेंज ना करें, वो ठीक है. If it is not taking place, it is not a reproach on the thesis that it takes place. It's a reproach to teaching itself. क्या कहने का मतलब? जब बच्चे अपनी मैथमेटिक्स को फिजिक्स में यूज नहीं करते, समथिंग इज रॉन्ग. अगर बच्चे ने मैथ्स पढ़ी 10 साल, 11वीं में वो फिजिक्स में मैथ्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, फिजिक्स की मैथ्स को नहीं समझ पा रहा, इट इज डन, समथिंग इज रॉन्ग, एग्रीड. बट कैन इट बी दैट ही लर्न्ड वेरी लेस मैथमेटिक्स? Instead of saying that transfer of knowledge doesn't take place, can we say there was no knowledge that could have been transferred? Latin, जो मदद करती है स्टूडेंट्स की फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस सीखने में. अगर आप लैटिन सीख के आए हैं लेकिन आप इन लैंग्वेजेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन नॉट ऑन द फैक्ट दैट ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट टेक प्लेस. It's a reflection upon the teaching of Latin. ये स्कूल्स पे कमेंट है, ये उस फैक्ट पे कमेंट नहीं है. English is applied grammar. So when we prove that learning grammar does not improve English expression, and it seems that it has been proven, the inference must be that grammar was taught badly. Schools had failed. Lack of transfer कोई law of nature नहीं है. No study says it. It's an indictment of teaching. Latin वैसे सीखना जैसे उसको सीखना चाहिए था, वो मदद करेगा ही करेगा दूसरी लैंग्वेजेस में. मैथमेटिकल थिंकिंग पे ग्रास्प होना फिजिक्स को टैकल करने में मदद करेगा ही करेगा. The investigations on the transfer of training simply go to swell the great volumes of evidence that the schools have failed.